अब तक गुजरात के अहमदाबाद में उत्तरायण के पर्व पर छत को किराए पर देने की परंपरा थी, लेकिन अब तो ये परंपरा वडोदरा में भी शुरू हो गई है। दरअसल पोड़ की जो उत्तरायण होती है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। पोड़ में उत्तरायण मनाने के लिए हर कोई काफ़ी उत्साहित होता है। उसी के तहत वडोदरा में अब छत किराए पर देने की प्रथा शुरू होती हुई नजर आ रही है। पोड़ में उत्तरायण के लिए छत का किराया 18 से 20 हज़ार रुपये है। विदेश से वतन आए NRI नागरिकों की ओर से छत को किराए पर लिया जा रहा है। एक छत पर 15 से 20 लोग उत्तरायण मना सके ऐसा आयोजन भी करवाया जा रहा है। और साथ ही किराए पर देने वाले की ओर से अहमदाबाद की तरह ही वडोदरा में भी जिन्हें भी छत किराए पर दी जाएगी उन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक हर सुविधा मुहैया करवाई जाने वाली है। અહીંયા ઉતરાયણને લઈને પૂરી તૈયારી થઈ રહી છે। જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આજુબાજુમાં કે લોકો ધાબા સાફ કરી રહ્યા છે અને આ જગ્યા 4 દરવાજાની વચ્ચે આવેલી છે। રૂપાલી કોમ્પ્લેક્સ છે જેમાં લોકો હવે ટ્રેન્ડ વધી રહ્યો છે કે જેમ કે લોકો અહીંયા ભાડું આપીને પણ ધાબુ લઈ રહ્યા છે, કારણ કે આ જે જગ્યા છે એ તમે બીજે જશો તો એવી મજા નહીં આવે। આ પોળની જે ઉત્તરાયણ છે એ પાછી વખણાઈ રહી છે અને લોકો દૂર દૂરથી આવીને, જેમ કે NRI પાર્ટી હોય છે, અમે એક NRI પાર્ટી છે એમને આ ધાબુ રેન્ટ પર પણ આપેલું છે 20 થી 25 હજારમાં। એમાં અમે બહુ બધી સુવિધા પણ આપેલી છે, જેમ કે 2 દિવસનું ખાવા પીવાની સાથે કેરટેકર પણ આપ્યો છે અને જેમ કે નોર્મલ જે જરૂરિયાત વસ્તુ જે પણ હોય છે પાણી વગેરે વગેરે એ પણ બધું આપેલું છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।